जा रहे हैं बोटेनिकल गार्डन। हैफे का सबसे खूबसूरत तरीन जगह है वो बोटेनिकल गार्डन। जाएंगे वहाँ पर करेंगे एंजॉय। गला दूसरा दिन है ख़राब है लेकिन करेंगे एंजॉय। ताजुल खान यूसुफ मेरे साथ है और जा रहे हैं टैक्सी में। तो कैच यू गाइस नेक्स्ट फ्रॉम बोटेनिकल गार्डन। Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores there is something more just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. Oh, I come alive inside your eyes. Come follow me to a secret place where only the moon can see. मैं बोटेनिकल गार्डन पहुंच चुका हूं लेकिन बारिश हो गई है शुरू। अभी देखना है कि बारिश कब तक जो है ये जो हमारा जो टाइम है ये ख़राब करता है। बहरहाल बहुत ही फिट है जगह, बहुत ही नाइस है। आप इस तरफ देख सकते हो ग्रीनरी। बोटेनिकल गार्डन इस जगह का नाम है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन हैफे। I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. Oh, I come alive inside your eyes. तो अभी हम आ चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत बीच पे। ये आप लोग देख सकते हैं हैफे में। शायद कुछ लोग भी इमेजिन नहीं कर रहे होंगे कि हैफे में भी ऐसी जगह मौजूद है, लेकिन हाँ हमने फाइनली जगह एक्सप्लोर की है। बहुत ही खूबसूरत जैसे बीचेस होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेवर जो है रॉक्स जो है वो पड़े हैं, बड़ा फिट है। यहाँ पे आप जंगली दरख्त जो है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि ओरिजिनली होता है एक बीच साइड पे। तो मुझे इंतहाई अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ओरिजिनल प्योर बीच कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे आई होप कि थोड़ी सी तस्वीरें मैं ले लूँ और ड्रोन भी फ्लाई करूँगा क्योंकि ये फ्लाई जोन है। गाइस बीच पे हमने काफ़ी इंजॉय किया। नहा तो नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। अभी जा रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारी खूबसूरत सी जगह है, वहाँ पर इंजॉय करेंगे। वाह, सॉलिड रॉक।
गाइस, तो फाइनली जो खफे का टूर था 2 दिन का वो हो चुका है कंप्लीट। अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपनी सिटी हुबू। तो 7:30 पे मेरा ट्रेन का टिकट है। तो अभी मैं बैठा हूँ जो ऊबर है उसमें, जो अभी तकरीबन 30 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा ट्रेन स्टेशन। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ चुकी होगी। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ thumbs up, subscribe and share this video with your friends, and thank you so much. I love you all. See you in next video. Bye bye.